Are you also struggling to go to the gym? Well, do not worry, क्योंकि आज हम आपको वीडियो में एक ऐसे बेसिक बजट फ्रेंडली जिम सेटअप के बारे में बताने वाले हैं जो आप अपने घर में कर सकते हैं और जेब से ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे. So let's start. But the first thing that you require to set up a home gym is a mat. You can perform all your core exercises and strengthen your core, as well as you can do yoga. Well, the next thing that you need in your home gym, and the most important, are a set of good dumbbells. Well, you can begin with 3 or 5 kgs. That totally depends as to how much weight you can lift. Well, you can perform all your exercises related to your hands, to your shoulders, and also legs की भी अच्छी exercises हो सकती है. You can do weighted squats with them. Well, the third equipment that you need for a home gym setup is a stepper. Well, हर कोई treadmill या फिर cycle afford नहीं कर सकता. So you can buy this and perform various kinds of exercises on this stepper. और कार्डियो जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा एंड डेफिनेटली पसीने जो है वो रनिंग से ज़्यादा निकलेंगे. अ बेंच, यस, घर में जिम सेटअप करना है तो अगर कोई पर्टिकुलर जिम इक्विपमेंट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ गुड बेंच. इससे क्या होता है, यू कैन डू ऑल योर एक्सरसाइजेज इन ग्रेट पोस्चर, चाहे वो चेस्ट की हो, शोल्डर्स की हो. यू कैन ऑल्सो डू वेरिएशन विद योर कोर वर्कआउट ऑल्सो. सो डेफिनेटली इन्वेस्ट इन अ गुड बेंच फॉर अ होम जिम. So as you can see, मेरा बेसिक होम जिम सेटअप हो चुका है. मेरे पास कार्डियो करने के लिए स्टेपर है, एक्सरसाइजेस कोर वर्कआउट करने के लिए मैट है, वेट लिफ्टिंग के लिए डम्बेल्स है और वेरिएशंस करने के लिए मेरे पास है बेंच. बट स्टिल वन थिंग इज डेफिनेटली मिसिंग एंड आई फील इट इज़ अ मस्ट इफ यू आर ट्राइंग टू सेट अप योर जिम एट होम. इट इज़ अ रोलर. सो जनरली हम लोग अपने मसल्स को रेस्ट देना भूल जाते हैं. हम सिर्फ वर्कआउट करते रहते और भूल जाते हैं कि यार मसल्स को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है. सो फोम रोलर इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू गिव रेस्ट एंड सपोर्ट योर मसल्स व्हेन इन पेन. सो डेफिनेटली अ must buy. So if you have a sore muscle or on your arm or on your leg or any part of the body, you can do different variations with this particular foam roller. So इसको खरीदना ना भूलिएगा. Well, इन सब equipments के अलावा कुछ और भी छोटे मोटे equipments होते हैं that you must buy. Number 1 is a skipping rope. उससे आप अपना warm up शुरू कर सकते हैं. Maybe you can perform 30 or 50 rope jumps and you will be sorted as आपकी पूरी body जो है अच्छे से gym workout वाले mode में आ जाएगी. While the next thing that you should definitely have is a good pair of gloves. So when you're lifting weights, your hands come in contact directly with the dumbbells. So if you have support in your arms in place of a good pair of gloves, then you will get a really nice grip to hold them. And lastly, do invest in good athleisure wear, that is gym wear. So these were some of our recommendations for you if you're trying to set up your home gym, but budget में. And lastly, do not forget to like and share this video with your friends and family या फिर जो भी आपके नोन में घर में जिम सेटअप करने की तैयारी कर रहा है.